This conference will now be recorded. Yeah, anyone? Myra, Sorry, sir. what did we study last class? Can you give me a synopsis, a small brief? We studied about who is business analyst, what is their responsibility and all, Okay, and the that's it. company, two types of company, the product based and the regular IT company. Yeah. What is the difference between product-based and IT-based company? Product based is कोई पर्टिकुलर कंपनी है वो प्रोडक्ट बनाती है, मतलब ऑर्डर लेके बनाती है. ऑर्डर लेके बनाती है. हम्म. Okay, somewhat close. Moksha, Yes, sir. tell me, continue. So, yesterday I studied what is the business analytics, then the three roots of the business analytics. जो नहीं होते वो ध्यान से three roots of the business analytics वो and the two company of the problem base company and IT company. Three thumb And rules of business analysis, right? Thumb rules yes, क्या है? What are the three thumb rules? the no question is a stupid question, but the question is the right time पर question जो किया जाता है. Question should be asked at the right time. Great. Yes. Second क्या है? Meet Listen second to क्या? other. Let me. You are not a salesperson. You are a business analyst. Yes, नहीं. Correctly बोलो. Second क्या था? Second क्या था? Third क्या था? Second था listen to understand, To not to understand, respond. not You will have respond. many opportunities Hmm. to. You will Respond. have many Second, opportunities to respond. Yes or no? But not a respond. second chance to Yes, Hmm. listen. second chance. Correct? Yes, Yes. yes. Third is learn to say no. And to We say are not no. sales Yes, guys. We are software yes. development team. We commit what we deliver. We deliver what we commit. Right? Very, very important. Remember it. Moksha, by the way, did you join? Did you move to US recently? No, sir. No. Okay. No. No, you have not got an accent yet. You have still the Indian accent, but Mahir already got the accent. Okay. Great. Mahira has a great accent. Mahira, teach me a टीच यू. US accent. पहले से है. ओ पहले से है पर आप पहले से हो क्या उधर? नहीं नहीं नहीं, पहले से ही एक्सेंट आ जाती है मेरे. ओके, मुझे तो नहीं है, मैं तो भाई सिंपल बोलता हूँ. ठीक, अच्छा है पर वो. हम तो भाई ऐसे ही है. कहीं पर भी जाए अपना. Okay, great. So now we will go to the business analysis stages. So what are the three stages of business analysis? We will come to the software development, but primarily we divide the business analysis stages into three stages, BA stages. One is called pre-project. One is pre-project. Second is during done analysis done during the project, during the software project. And third, it is post-project analysis. So pre-project analysis, post-project analysis, and during the project post. So let's give an example. So what example did we take last time? We took the example of the where the company was Lenskart. losing productivity. No, productivity. So then the company decided that they should go ahead with the a software, right, or not, to mark the attendance. Correct? Yes or no? हम्म. Yep. What kind of, so are you going to immediately go and purchase it? For example, you have decided to buy a software, a phone. Let's say iPhone, let's say 15 is being released, or it's iPhone now OnePlus 11 is released. Today is Valentine's Day, so everybody is want to buy it. But do you directly go and buy, or do you go do some kind of research, ask your friends who already bought the same phone,
try to maybe see a review in the YouTube. Yes or no? Yes. Maybe you go to a shop where there are already phones available for demo. You try to get a hang of it, try to understand the feature. If you like it, so these kind of things you do. These are what? These are pre-project. These are pre before buying. You what type of checks you're doing. Similarly, so when you are going to when you are decided to buy, you're decided to go for attendance system. So what do? You first do a market research. Yes or no? You go to maybe you ask your competitors, your market, your friends who already have in different companies. Obviously, when you say you, it is not you. It is basically the client who does that. The client will ask. So pre-project analysis is done by the client because you will sell your product only. You will not allow others. However bad your product might be, you will never say, "Oh, sir, my product is bad." You will always say, "My product is good." So what the pre-project analysis is done? So one is analyze information from various resource, do a market research, competitor analysis. Okay, then you understand the what are the business need analysis. Such type of background work is called the pre-project analysis, where you decide what to take, what not to take, how much to take, where to take, when to take. Yes or no? So all this research, all this background work is called pre-project analysis. Is it clear to all of you? Okay. Yes. All of you. So after Yes. you do the pre-project, you have decided, yes, I will go ahead with the. I'm giving my example, my company, Indus Software. So you've decided, okay, I'll take the product from the Indus Software. So what do? Now the complete thing SDLC, where the requirement gathering, the documentation, okay, the discussions, okay, change management, product management, everything is done, testing, all these are part of the analysis during the projects, which we will be largely seeing this. Yes. So our work will be mostly this one and post project. What we're going to study, everything, testing, how do we do testing, how do we discussion, how do we write the requirements in a document, what are the ways of writing a document, what are the different documentation being done, all this will be taught. Okay. And next, the post project. After you deliver, you have already bought a bike, for example, you have already bought a bike or you already bought a phone. What do? You try, you again go for the website, register your product, ensure that you find a service center and keep the service center numbers handy, because tomorrow if there is an issue, you can always reach out to them. Okay. And then you what do? If you let's say your phone is having an issue, then you try to record the issue and try to have a proof of it. So all this, similarly, when your product is being delivered, you have already delivered the product to the client, and client has started using it. Then they raises bugs. What are your bugs? They raises issues, so tickets. So see, and they mail you. Then they collect some data. They started collecting data. They all these are called post project. What is a post project? After you deliver the project, after you implement the project in the client system, client environment, what are the various activities you do? If there are issues, they raises to you. You check it whether there's a real issue, whether it's an understanding issue, or it's some kind of configuration issue, or it's a real issue. If it's the issue, then you have to go for your code fix. Then you have to release a bug, or you have to release some kind of patch, software patch, so that it can help. So all these things are called post project analysis. Is it clear to all of you? Yes. Any Yes, sir. doubts? Yes. Right. So uh, we have six knowledge areas in the business analysis. What you're going to study, you can write down. The first is SA, strategy analysis. In the pre-post, sorry, No, no. pre-project. So no. I'm just giving example. These There are six knowledge areas in the BABOK. I will introduce BABOK shortly. BABOK is a BA Oh, book, which is yes. very, very important. Okay. There are six knowledge areas in the BABOK. The first is strategy analysis. Second, BAPM, business analysis, planning and monitoring.
BAPM, business analysis, planning and monitoring. Third, REC, requirement elicitation and collaboration. Requirement elicitation and collaboration. Sir, can you please repeat again? Requirement? And requirements elicitation and collaboration. Fourth, requirement analysis and design definition. Requirement analysis and design definition. Design? Definition. Analysis. Fifth, requirement lifecycle management. Requirements lifecycle management. Last one, solution evaluation. Clear? Yes. Yeah. So the first strategy analysis, you can write down a sentence on that. Work needed to understand current state of an enterprise. Identify strategic or tactical needs. Identify? Strategic or tactical needs. Define a future state and work with the stakeholders on the change strategy to help the enterprise reach the desired future state. On the change strategy, what? To help the enterprise to reach the desired future state. तो इसमें क्या होता है To reach? बेसिकली आपको to reach the desired future Sir, state. Yes, sorry? Reach the? to reach the desired future state. तो इसमें क्या होता है Okay. इसमें आप क्या डिसाइड करते हो you first understand the current state of the enterprise, identify the need, strategic or the tactical needs, okay, the problem statement, okay, and then you plan, you discuss with the stakeholder, work with the stakeholder to change the strategy. So the strategy what we decided was to change from the manual to the automated attendance system, wherein you can mark the attendance using the fingerprint or biometrics. Yes, to reach the desired future state. So it's a strategy, and these are always decided on the top level, because these are the some of the very important decisions which are taken on the top level when the management takes it. Maybe the CEO, CEOs, or the CFOs or the CMOs takes it. Who you don't have anything, they decide and you have to implement it. Do you understand what is this about? Is it clear? What do you mean by strategy analysis? Yes. Yes. Yeah. Yes. Second is BAPM, BAP. work done. Yeah, you can write down. I'm just giving one sentence so that it'll help you. What is the knowledge area? Anyway, we are going to cover each of the knowledge area in each will be done in one class. So we'll see in detail. So the second is work done
So business analysis, planning and monitoring. So what you are planning? You're planning to do some kind of tasks. So work done to ensure BAs and stakeholder, work done to ensure BAs and stakeholder, BAs and the stakeholder are on the same page in terms of work to be done. Same page. In terms of work to be done, comma, timelines, comma, dependencies and overall stakeholder expectations. Dependencies and overall stakeholder expectations. So इसमें क्या होता है बेसिकली, आप लोग सेम पेज पे रहते हो. It's very very important that the stakeholder, the BA, all the people who are involved in the project are on the same page. You cannot have discrepancies. You cannot have disagreement between the team. So it's always the team which have to be the same page. You first agree that, sir, this will take this much time, I need this much resource, I need this one. So everybody needs to be on the same page in terms of the timelines, in terms of work to be done, what are the activities to be performed, yes or no, and what are the dependencies and the expectations. Did you understand? Hmm. Clear? Anybody any doubt? No, sir. No, sir. Great. Third, requirement illustration and collaboration. Write down. Describe. पहले क्या था, क्या करोगे, सेकंड में describe करो. Describe work to prepare, describes work done to prepare, describes work done to prepare, conduct elicitation and confirm the captured information with stakeholder. Capture. Captured information with stakeholder. Collaboration happens on an ongoing basis for the maintaining on the information, for the maintaining of the information. तो पहले में आपने डिसाइड कर लिया, आपने क्या क्या काम करना है, एग्रीमेंट कर लिया. अभी आपने क्या किया, यू डिस्क्राइब, क्या ये काम को कैसे करना है, डिस्क्राइब करना है, और प्रिपेयर अंदर कैसे जाना है. करना है? यस, उसके ऊपर मोर इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट करते हो. जो करते हैं. इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट करते हो, यू कैप्चर डिस्कस करते विद द हुए. स्टेक. एग्जैक्टली. एंड देन यू go more inside it. और ये कोलैबोरेशन जो होता है, ये ऑनगोइंग बेसिस होता है. ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में आपने कोलैबोरेट कर लिया, ये करना है, बस हो गया, उसके बाद खत्म. नो, the project is such that you need collaboration, you need proper agreement, everything. It's a teamwork. It's not a single job कि भाई कर लिया, 100 मार दिया. नहीं, आपको एक टीम वर्क करना है. You need everybody. You need people who will test. To You collaborate have to. people. Exactly. तो ये पूरी टीम हम देखेंगे कौन कौन रहेगा. हम देखेंगे स्टेक होल्डर कौन रहेगा, प्रोजेक्ट मैनेजर कौन है, टेस्टर कौन है, एसएमई कौन है, डोमेन एसएमई कौन है, डिलीवरी मैनेजर कौन है, सारा हम देखेंगे कौन कौन है. मैंने तुमको 2 पीडीएफ भेजे थे Yes. तीनों को. Yes. ठीक है, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. मैं जब बाद में डिस्कस करता हूँ, आई विल टेक एसएमई, सो यू नो व्हाट इज एसएमई, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. कल कोई मेनली तुम्हारे ऐसा नहीं है कि तुम ये कोर्स करोगे, तुम्हारे कभी भी कुछ भी वर्ड बोल सकते हैं. दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स विच यू शुड नो. So don't wait for me to, I will not teach that. I will teach when anything is comes up. But please try to read it and try to understand it. कुछ डाउट होता है तो आप पूछो. Is it clear to all of Okay. you?
ओके, मतलब सर जो वोकेबुलरी है जो Yes, वो sir. उसके असाइन करता है ना, जो वर्ड है तो उससे रिलेटेड वो बोल इससे मीनिंग है ना करेक्ट, वो जो सब सारे। करेक्ट। मतलब क्या है? ओके। जैसे मान लो एलिसिटेशन का मतलब क्या है? मैंने बताया। यस। उसमें बहुत सारा वर्ड है जो आपको मतलब दीज आर बिजनेस एनालिसिस टर्म। वो बेसिकली एक पीडीएफ, बेसिकली एक वोकैबुलरी लिस्ट है। वो आपको हेल्प करेगा आगे जाके। ऐसा नहीं है कि इमीडिएटली हेल्प करेगा, आगे जाके जब आप प्रोजेक्ट भी लोगे तब कोई बात करेगा, यू डोंट आस्क देम व्हाट इज दैट, यू ऑलरेडी नो देम, करेक्ट? सेकेंडली, देयर आर मेनी टाइम्स यूज अब्रीविएशन, अब्रीविएटेड लैंग्वेजेस। एसएमई बोलते हैं, या बोलते हैं टेस्ट, टी बोलते हैं, टीपीएम बोलते हैं। जस्ट अ मोमेंट, गिव मी अ मिनट। तो आपको क्या करना है, जैसे बंद करो। सो इसमें जैसे बहुत सारा होता है कि हम लोग बोलते हैं कि टीपीएम क्या होता है। टीपीएम बोलते हैं टेक्निकल प्रोजेक्ट मैनेजर। एसएमई क्या होता है? सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। तो इसको आपको पता नहीं चलता है। कभी कभी क्या होता है, लोग यूज कर लेते हैं इजीली। एफएसडी, फंक्शनल स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट। एफआरडी, फंक्शनल रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। कोई बोलता नहीं है आपको, तो इसीलिए ये वाला दिया जाता है। ठीक है, तो इसको आप गो थ्रू करो, तभी ताकि आपको याद रहेगा। गो थ्रू नहीं करोगे भूल जाओगे। ठीक है, Yes, sir. ग्रेट। सो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ वन, रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड डिजाइन डेफिनेशन। ये क्या होता है? यू कैन राइट डाउन अ जो सेंटेंस। एनालिसिस जो हाँ। एनालिसिस और डिजाइन का जो डिफरेंशिएशन जो रिक्वायरमेंट्स रहता है ना, उसका मींस बाइफरकेशन वो ही रहता है कि क्या होता है प्रॉपर की एनालिसिस क्या और जो करेक्ट, करते हैं हम लोग। वेरी गुड, वेरी गुड। परफॉर्म हमने स्ट्रक्चर करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, अपने मॉडल्स बनाते हैं, वैलिडेट करते हैं, डिजाइन करते हैं, और जो जो वर्क करना है उसको आइटरेटिवली और इंक्रीमेंटली बढ़ाते हैं। कभी भी याद रखो, आई व्हाट मीन आइटरेशन। आइटरेशन मतलब क्या बात? एनीबॉडी व्हाट यू मीन आइटरेशन? एनीबॉडी? मीत, मोक्षा, यू आर ऑल एनालिटिक्स एक्सपर्ट्स। आइटरेशन तो आपको पता ही रहेगा ना? वो डिलीवर करता है जो सॉल्यूशन रहता है ओरल, उसको नहीं नहीं, आई थिंक आइटरेशन का मतलब क्या आइट्रेशन। है? आइटरेशन का मतलब क्या? यू आर ऑल, यू आर डूइंग एनालिटिक्स ओनली, राइट? नो, नहीं पता? जो प्रोसेस किया होता है, तो बार बार प्रोसेस करना, जो। बार बार करना। आइटरेशन मतलब बार बार करना। कभी कभी क्या होता है, आप एक, कभी कभी क्या होता है, आपको रन करना होता है मल्टीपल टाइम्स, क्योंकि आपको नहीं पता कि कभी सक्सेस हो सकता है। आइटरेशन मतलब एक, आपने पढ़ा होगा फॉर लूप, व्हाइल लूप पढ़ा है कि नहीं कोड में? अगर आपने सी सी प्लस प्लस पढ़ा है, पाइथन पढ़ा है, मैं Yes. ये पढ़ा है? मैं वो हिसाब में वो बैकग्राउंड से नहीं हूँ सर, सो आई डोंट नो। ओके, ओके। नहीं ऐसा नहीं है, आपने ट्वेल्थ में पढ़े होंगे या नहीं टेंथ में नहीं, पढ़े मैंने होंगे। टूल्स किया है, पाइथन किया है, बट इतना डीपली नहीं किया है जो मैं सेमेस्टर में जो आता है। मैं फाइनेंस में थोड़ा बहुत कोडिंग वाला वही चलेगा, बस चलेगा। बेसिक जो था। ठीक है, ठीक है। तो आइटरेशन मतलब एक चीज को बार बार करना, सेम चीज को बार बार करना, ओके। उसको आइटरेशन बोलते हैं। और ये नॉर्मली आपका वाइल लूप में, फॉर लूप में अगर आप पढ़े होते तो उसमें पता चलता। आई 10 बार, 200 बार, 300 बार, 400 बार, तो 400 बार रन करता है, अपना कंप्यूटर रन करता है, उसको आइटरेशन बोलते हैं। और इंक्रीमेंटल मतलब क्या है? इंक्रीमेंटल मतलब थोड़ा 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 बढ़ा के, पहले 1 किया, फिर 1.1, फिर 1.2, फिर 1.3, यू इंक्रीज इंक्रीमेंटली। ठीक है, राइट डाउन। टास्क, इसमें टास्क दैट बीएस परफॉर्म, टास्क दैट बीए परफॉर्म, सर एक सर प्लीज स्लो। या टास्क, फॉर टास्क फॉर दैट बीएस परफॉर्म। हमारे बच्चों को भी हैबिट नहीं रहा रनिंग नोट्स का। when we were there, our professor used to just take, बड़ा बड़ा बोल देते थे। हम लोग कोई रिकॉर्डिंग नहीं होता था तभी, तो हम लोग क्या करते थे, फटाफट लिखते थे। हम जो रनिंग नोट बेस्ट लिखता था उसी को हम लोग पैसे देते, भाई दे दे यार तेरा कॉपी, क्योंकि वही फास्ट लिखता था और बाकी सब छूट जाते थे। हमारे 2 इयर्स से आदत चली गई है, बट वही ऐसे वही फास्ट वही, लिखने इसीलिए की। मैं आदत बनाना चाहता हूँ थोड़ा सा। वी विल गो टू द ट्रेडिशनल वे। और उसमें तो आपको रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है। ठीक है, टास्क दैट बी एस परफॉर्म टू स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइज,
specify model, comma, verify and validate the requirements, verify and validate the requirements, and design. Work is done iteratively and incrementally. Work is done what? ठीक है? Iteratively, in iterations, and incrementally, in incrementally. Fifth one, requirement life cycle management. इसमें क्या होता है? लाइफ साइकिल मैनेजमेंट मतलब क्या है? जो बीए काम करता है, जो रिक्वायरमेंट डिजाइन करता है, इसको रखना होता है. इसको आप ऐसा नहीं कि फेंक दो, आपने हो गया फेंक दिया, नहीं. प्रोजेक्ट टिल द रिटायरमेंट सब कुछ को स्टोर किया जाता है, रिपोजिटरी किया जाता है. क्यों? क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये. कभी कभी क्या होता है, मान लो आपने एक केस स्टडी किया, एक इंपॉर्टेंट कुछ तो एक रिक्वायरमेंट आया जो आपने बहुत मेहनत की इसके ऊपर, एंड you succeeded in cracking it. Now there is another project which has come for you, some other, so they want to check, अरे भाई उसने कुछ तो किया था. So you, those solution documents will be helping as a guide कि भाई तुमने जो किया था वो हेल्प करो. और कभी कभी क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ, हम लोग क्या करते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, वो लोग बोलते हैं कि भाई देखो ये वाला ना बनाने के लिए टाइम लगेगा, ये हमारे पास है नहीं, इट विल टेक दिस मच टाइम एंड वी विल चार्ज यू. ठीक है, तुमने बना दिया. अभी कोई रिक्वायरमेंट, सेम रिक्वायरमेंट कोई दूसरा क्लाइंट देता है, तुम उसको भी वही छापते हो, बट तुम्हारे पास ऑलरेडी तुमने बना दिया है. तो तो अगर तुम्हारा स्टोर नहीं करोगे वो चीजें, जो कोड्स, जो डॉक्यूमेंट, वो सब क्या होगा, you cannot use it further. Even simple such thing है, when you are in the college, when you are doing a graduation, grads, you all your project, all your internships जो भी आपने किया था, that college stores it, yes or no? कॉलेज रखता है रिपोजिटरी में, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि जब कोई दूसरा प्रोजेक्ट आता है तो वो लोग देते हैं, भाई रेफरेंस में देखो ये माहिरा का है, ये मोक्षा का है, इसको देखो उन्होंने कैसा लिखा है. सो दैट प्रोफेसर्स गिव एग्जांपल एज अ रेफरेंस कि देखो उन्होंने ऐसा बनाया, ऐसी तरफ को बनाना है. सो ऑल दिस डॉक्यूमेंट हैव्स टू बी स्टोर्ड forever. Why? These are required. Is it clear? Yes. Yes. Work done by a BA to manage and maintain requirements. Work done by Work. BAs to maintain requirements and maintain requirements and design information from inception to retirement. From inception to retirement. Maintain relationships between requirements and managing any changes. Mental relationship. Between requirements and managing any changes. Clear? So last is solution evaluation. तो मैंने जैसे बताया कि फर्स्ट थिंग इज दैट यू हैव मल्टीपल सॉल्यूशन, यू नीड टू एसेस, इवैल्यूएट कि कौन सा सॉल्यूशन विल गिव द मैक्सिमम वैल्यू. ठीक है, और ये सॉल्यूशन फुल पोटेंशियल में चलता है कि नहीं, यस और नो. एंड ऑल्सो रिमूव एनी बैरियर्स टू रियलाइजेशन. तो मल्टीपल सॉल्यूशन में कौन सा सॉल्यूशन बेस्ट है जो वैल्यू प्रोवाइड करेगा और फुल पोटेंशियल में काम करेगा. सो राइट डाउन. Assessment and evaluation of value. Assessment and evaluation of value
delivered by the solution to the enterprise, delivered to the solution to the enterprise. Focus is also on removing any barriers. Focus is also on removing any barriers to realization of full potential, realization of full potential of the solution, of the solution within the enterprise. Clear? Yes. बुधवार को वेडनेसडे, ठीक है, Hmm. वेडनेसडे, okay, आज can we have a session tonight 9 p.m. we decided, no, 9 p.m. IST. Tomorrow, आज आज रात कल का के सेशन लिए। आज रात को, यस, मतलब मेरे लिए रात को, तुम्हारे लिए जो भी, तुम्हारे लिए शायद 7:30 p.m. होगा क्या, AM होगा क्या? Yes. आज यस एक दिन, आज एक दिन, अगर कल मुझे नहीं, कल अगर क्लास, कल शायद मैं क्लास ना करूं क्योंकि आई नीड टू गो टू ऑफिस टुमारो एंड थर्सडे, ये 2 दिन मुझे ऑफिस जाना है, तो हम लोग आज रात को क्लास करेंगे। और क्योंकि वेडनेसडे थर्सडे में शायद नहीं कर पाऊंगा, वेडनेसडे को तो नहीं कर पाऊंगा, अगर अगर रहेगा या वेडनेसडे तो मैं नहीं कर पाऊंगा, थर्सडे को मैं रात को कर सकूं वो भी मैं, आई कैन नॉट गारंटी। बुधवार गुरुवार वी विल नॉट हैव क्लास, ट्यूसडे टुडे टुनाइट विल हैव क्लास, ठीक है। तो वेडनेसडे एंड थर्सडे यू कैन टेक ऑफ, अगेन फ्राइडे we will have morning and evening so that to compensate what we missed, ठीक है, Okay. चलेगा ना? जस्ट मैनेज गाइस, थोड़ा सा मेरे को प्रॉब्लम है, आई नीड, बिकॉज मेरा ऑफिस जो बहुत दूर है, आई नीड टू स्टार्ट एट 7:30, अगर मैं ना आऊंगा देन ओनली आई कैन लीव अर्ली मॉर्निंग, ठीक है। सो टुनाइट वी हैव क्लास एट 9 p.m. Remember it, note it down. Again on Friday we'll have again morning and evening, morning 7:30 a.m. IST and 9 p.m. IST, ठीक है। फिर सैटरडे को नॉर्मल, सैटरडे फिर सुबह जो भी विल फॉलो द नॉर्मल प्रोसेस, ठीक है। वीक में मेरे को 1-2 दिन ऑफिस जाना होता है, दैट्स व्हाई आई नीड टू बी अवेलेबल। क्लियर? Okay. ओके, नो, 3 of you? Okay. मतलब सैटरडे को भी यस सर क्लास रहेगा, राइट? क्लास तो डेली रहेगा, अगर, हाँ, क्योंकि आपको एक, देखो मेरा क्या कहने का है, इसको जल्दी खत्म करते हैं, अगर आप इसको डिले करोगे तो डिले होता जाएगा, एक घंटे ही तो बैठना है कि नहीं, और अच्छा लगेगा तुमको, है ना? एक घंटा, देखो सर, बात ये है कि देखो कोई वेरिएबिलिटी किसी को भी कुछ भी हो सकता है, जैसे मैं ऑफिस जाता हूँ, तुमको भी हो सकता है काम, तो इसके लिए हम लोग को जितना जल्दी जल्दी कवर कर लेंगे उतना बेटर है। तो मेरा ये Okay. मेरा मानना है कि आई वांट टू फिनिश इन February एंड और मैक्स टू मैक्स मार्च स्टार्टिंग, मार्च 5 या 6 तारीख को। और क्योंकि Okay. जितना जल्दी कवर करेंगे उतना हमारा आगे जाके कुछ डाउट्स रहेगा तो यू कैन ऑलवेज टेक इट अप। कुछ डाउट्स है, मान लो आपको सेशन देखना है कि नहीं सर ये थोड़ा सा बता दो, तो ऑलवेज वी कैन डू, ठीक है। मतलब सर ये पूरा थियोरी बेस्ड ही है, अभी आप जो सिखा रहे हैं हम लोग को बेसिक से अभी तो थियोरी थ्योरी बेस्ड। बेस्ड है, जो प्रैक्टिकल बेस्ड रहेगा मैं वही, एक्चुअली मैंने आपको दिया नहीं ना बीए अपना ओके। आउटलाइन, मैंने आपको आउटलाइन दे देता हूँ, कोर्स आउटलाइन। इसमें आपका जो मेन प्रैक्टिकल है वो है यूज केस, मैं बता देता हूँ, यूज केस, यूजर स्टोरीज, ईआर ओके मॉडलिंग, ठीक है, ओके उसको बोलते हैं यूएमएल, यूएमएल डायग्राम्स, उसमें आपका ईआर मॉडलिंग आता है, यूज केस आता है, Useful. यूजर स्टोरी आता है, और एसक्यूएल एंड पाइथन, यही प्रैक्टिकल है।
और बाकी सारा थियरी है। थियरी मतलब क्या है, मैं पढ़ाऊंगा बट मैं आपको दिखाने भी वाला हूँ कि डॉक्यूमेंट कैसे लिखते हैं, एक एफएसडी का फॉर्मेट कैसा रहता है, एक टेस्ट केस का फॉर्मेट कैसा रहता है, कैसे लिखना होता है, वही प्रैक्टिकल है। और आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो, दैट आई विल एक्सप्लेन यू, बट मैक्स टू मैक्स थियरी है और यही आपका प्रैक्टिकल है। देखो थियरी मतलब क्या है, मैं तो आपको बोल नहीं सकता ना इंग्लिश कैसे बोलना है। मैं आपको बोलूंगा देखो ऐसा ऐसा हमको बोलना है, असर्टिवनेस को फॉलो करना है कि आपको क्लाइंट के साथ ऐसे बात करना है। यू आर Okay. रीडिंग द थियरी पार्ट, प्रैक्टिकल जब आप करोगे तभी आप सीखोगे, है कि नहीं? बट Hmm. दिमाग में तो रहना चाहिए कि नहीं। मैं आपको बोलूंगा कि सर मेरे को गाड़ी चलाना है, मैं तो बोलूंगा बेटा जब गाड़ी चलाते हो ना, इंडिया में क्या करते हो, ऑलवेज फॉलो लेफ्ट, बट यूएस में ऑलवेज फॉलो राइट। तुम बोलोगे सर मैं प्रैक्टिकली कैसे करूंगा? अरे तुमको जानना होगा तभी तो तुम करोगे। फर्स्ट यू शुड नो द थियरी, नो देन यू कैन डू प्रैक्टिकल, यस और नो? Yes. Yes. ठीक है, तो ये थियरी बेस्ड है। लेकिन ये आपको जब मैं क्यों ये पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आपको ना एग्जाम लिखने को हेल्प होगा। जब मैं भी बताने वाला हूँ कि व्हाट आर द एग्जाम्स यू कैन राइट ईसीबीए, देयर आर सो मेनी, ईसीबीए, सीसीबीए, सीबैप, ठीक है। अ, उसके लिए आईआईबीए जो है वो आपका बॉडी है, गवर्निंग बॉडी है, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एनालिसिस, ये एक बॉडी है जो ये एग्जाम्स प्रोवाइड करता है। आपको एग्जाम लिखना है तो यू कैन राइट ईसीबीए बिकॉज यू आर फ्रेशर्स, यू आर नॉट ए वर्किंग प्रोफेशनल्स, सो यू कैन राइट Yes. दिस एग्जाम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए ये सब थियोरेटिकल क्वेश्चन ही आने वाला है, ठीक है। Okay. तो अपना क्लास रहेगा कब, आज रात को रहेगा, उसके बाद फ्राइडे को अगेन मॉर्निंग एंड इवनिंग। अगेन आई एम राइटिंग हियर, यू कैन नोट इट डाउन एंड यू कैन टेल द ऑर्गेनाइजर टुनाइट 9 p.m. IST, Friday 7:30 AM and 9 p.m. IST. फिर अगेन सैटरडे नॉर्मल 7:30, संडे ऑल्सो नॉर्मल। क्लियर? ठीक है, Hmm. ग्रेट। अभी हम लोग देखेंगे कि जो स्टेक होल्डर हमने बताया, हु आर द स्टेक होल्डर, लिस्ट ऑफ कॉमन स्टेक होल्डर। पहला स्टेक होल्डर कौन है? बीए। तो बीए तो हमने पढ़ा, हु इज बीए, हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर eliciting needs, requirement from stakeholder, defining and design Stakeholder. solution, ensuring that the needs of the enterprise or the stakeholders are met. Yes or no? Second, Hmm. customer. Customer कौन है? कौन customer है? Who uses your product? Yes or no? Yes. Who uses the product, services or solutions. Third, domain SME. What is domain SME? कभी कभी देखे हो तुम जब ज्वाइन करते हो एक कंपनी, ठीक है, तुमको बोला जाता है, Hmm. आई डोंट नो, मतलब तुम अभी Hmm. तो तुम पढ़ रहे हो, बोलते हैं कि बेटा यू गो एंड टॉक टू मिस्टर दीपक, दीपक इज वेरी वेल अवेयर अबाउट दैट, ही इज ए एसएमई। मतलब क्या है, वो सब्जेक्ट में एक्सपर्ट है, सब्जेक्ट मैटर Hmm. एक्सपर्ट। नॉर्मली जो वो आदमी, नॉर्मली क्या होता है, दिस टाइप ऑफ पीपल आर वेरी लॉयल पीपल, दे रिमेन फॉर द लॉन्ग टाइम इन द सिस्टम। जो बहुत कभी कभी क्या होता है, एक तो तुम नॉलेजेबल होता है, दूसरा तुम जब कंपनी में काम करते रहते हो, सेम काम बार बार करते हो ना, यू बिकम एक्सपर्ट। ठीक है, क्या हो गया? हेलो, एनीथिंग? No, sir. नहीं. Everything is fine. ओके, मेरे को लगा कोई डकार ये मारा, क्या बोलते हैं उसको, यॉन किया ओ करके। ठीक, ओके। पोजेस्ड डिटेल्ड एंड इन डेप्थ नॉलेज ऑफ ए पर्टिकुलर टॉपिक, ठीक है, ऑफ द नीड, बिजनेस नीड। तो इसको डोमेन एसएमई, possess detailed and in-depth knowledge of a particular topic. Fourth point, end user. End user, who is end user? Directly interacts with the resulting solution when the test has been completed. अभी मुझे बताओ, अटेंडेंस सिस्टम किसके लिए बना रहे हो? किसके लिए बना रहे हो? एम्प्लॉयज के लिए बना रहे हो? Employees.
तो एम्प्लॉय ज्यादा एंड यूजर। क्या? और कस्टमर कौन है? कस्टमर कौन है? कस्टमर कौन है? Who use the product, service or solution? तो डिफरेंस बिटवीन एंड यूजर और कस्टमर का मतलब क्या है, बताओ कौन हो सकता है? एंड कस्टमर यूजर कोई भी हो मतलब सकता है। वो कंपनी का, एंड यूजर मतलब वो कंपनी में जो लोन अप्लाई कर रहा है वो। नहीं, लोन नहीं बेटा। देखो, मेरे को बताओ, अंबानी, ठीक है, कौन है? मुकेश अंबानी या रतन टाटा, आर दिस पीपल गोइंग टू पुट बायोमेट्रिक्स, डू यू थिंक? No. नो, राइट? No. दे सो तो डिफरेंस बिटवीन कस्टमर एंड यूजर ये है, कस्टमर सब लोग होते हैं, ऑल एवरीबॉडी, मैनेजमेंट, डायरेक्टर्स, सीईओ, सीएफओस, बट एंड यूजर वही होते हैं जो एक्चुअल यूज करते हैं, एम्प्लॉयज यूज करते हैं। समझ में आ गया? Hmm. नेक्स्ट, इम्प्लीमेंटेशन एसएमई। इम्प्लीमेंटेशन एसएमई कौन होता है? जो इम्प्लीमेंट कराता है, जो आपका बिजनेस साइड से जो एक बंदा रहता है, जो बीए, वो भी बिजनेस बीए रहता है, वो इम्प्लीमेंट कराता है। ही इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द इम्प्लीमेंटेशंस फ्रॉम द क्लाइंट साइड। ठीक है। नेक्स्ट, ऑपरेशनल सपोर्ट टीम, ओएसटी। ओएसटी मतलब जो सबका सपोर्ट, ऑपरेशन का सपोर्ट मिलता है। अब मान लो कौन हो गया, एडमिन का हो गया, तुमको ट्रेनिंग कंडक्ट करना है, तो तुम क्या जाते हो, तुम उससे मिलते हो, वो बताता है कि सर आपको इसके लिए ये अप्लाई करना पड़ेगा, वो जाना पड़ेगा, वहां जाना पड़ेगा, आईटी से बात करना पड़ेगा। तो देयर इज एन ऑपरेशनल सपोर्ट टीम हु helps you in providing day to day support। आपको कितने डेस्क चाहिए, आपको क्या प्रोजेक्टर चाहिए, आपको टीवी क्या चाहिए, आपको माइक चाहिए, अंडरस्टूड? एडमिन रिलेटेड एक्टिविटीज, डे टू डे रिलेटेड एक्टिविटीज। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट मैनेजर, पीएम। तो व्हाट डज प्रोजेक्ट मैनेजर? Project manager manages the work to be done to deliver the solution. BA, normally a BA reports to the project manager. I am currently at TPM. I have many BAs working under me. When I was BA, that time I used to work to TPM. Now I report to my lead, tech lead, and tech lead reports to the head of enterprise, head of enterprise, and head of enterprise report to CTO, chief technical officer. समझ में आ गया? Did you understand? Yes. BA report to project manager report to the technical lead report to the head of enterprise applications, and head of enterprise report to CTO. CTO is a very ऊपर लेवल। CTO reports to किसको? CEO और MD। CEO को बहुत लोग रिपोर्ट करते हैं, CFO, COO, CRO, CTO। CFO क्या है पता है? चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। Officer. Financial ये चीफ ऑपरेशनल ऑफिसर, operational चीफ रिस्क ऑफिसर, चीफ टेक्निकल ऑफिसर। technical. ठीक है। Executive. ये तो सीईओ बड़ा है ना, ये नॉर्मली Hmm. मालिक ही रहता है। ठीक है, सीईओ। और सीईओ, जैसे टाटा ग्रुप के चेयरमैन कौन है अभी? तो आई डोंट थिंक रतन टाटा इज देयर, ही इज रिटायर्ड। रतन, ऐसे अगर रतन टाटा होते तो रतन टाटा इज द चेयरमैन ऑफ द टाटा ग्रुप। रतन टाटा के अंडर मल्टीपल सीईओ रहेंगे। टाटा पावर का अलग, क्योंकि टाटा हैज मेनी कंपनीज, ये सुनो। तो सीईओ इज द Yes. हेड ऑफ द कंपनी, चेयरमैन इज द हेड ऑफ ए ग्रुप। समझ में आ गया? ठीक है। तो नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट मैनेजर, बता दिया। उसके बाद रेगुलेटर। रेगुलेटर मतलब क्या है? व्हाट इज रेगुलेटर? हाँ, क्या है रेगुलेटर? मीत क्या होता है मीत? जो सर रेगुलेटर मतलब जो कंपनी के जो नीड्स होते हैं, लाइक बेसिकली जो एक्ट्स है कंपनी के दैट आर टेकिंग नहीं इनटू प्लेस और नॉट, वो सब चेक करता है। नहीं, रेगुलेटर मतलब रेगुलेटर, रेगुलेटर
is RBI is the regulator of the banks. RBI जो बोलेगा बैंक को करना ही है. Similarly, you have insurance में कौन है? SEBI, Security Exchange Board of India. They all maintain all mutual fund, stock market, everything. समझ में आ रहा है? Okay. IRDA, Insurance Regulatory Department Authority, they regulate all insurance company. समझ में आ गया? These are regulator. Yes, yes. PFIRDA, तो आपका जैसे यूएस में आपका शायद फेडरल रिजर्व, FDIC. Yes, Federal Reserve. एफडीआई, फेडरल रिजर्व, एफआर पता नहीं है, देख लो ना एक बार, मेरे को पता नहीं है, नॉलेज FIDC. नहीं है. फेडरल रिजर्व वो सब सारे बैंक के ऊपर रहता है. इट्स कॉल्ड दी मेन मदर्स बैंक. ये सब कुछ करता है, जो ये डिसाइड करेगा वही होता है. इंडिया में रेपो रेट बोलते हैं, रिपो रेट, रिवर्स रिपो रेट. अगर रिपो रेट बढ़ता है तो द लोन्स आर कॉस्टली, अगर रिपो रेट घटता है लोन्स आर चीपर. I took a housing loan for 8.25% in October. Now it is 9%. The repo rate has increased 3 times, 0.25. So they who all decide, they are decided by the regulator, RBI. तो आपका भी वैसे ही रहेगा. ठीक है? They are called regulator. Why regulator? Because regulator intervene. Regulator has all the they have the stake in the project. वो लोग बोलेंगे भाई तुम क्या कर रहे हो, ऐसा मत करो, ऐसा करो. So regulator is also a part of your stakeholder. कल regulator भी बोलेगा. और कभी भी याद रखो, जितना भी रिक्वायरमेंट आपके क्लाइंट ने दिया है, अगर रेगुलेटर क्लाइंट रिक्वायरमेंट देता है तो पहले आप उसको करना है, बिकॉज यू कैनॉट से नो टू द रेगुलेटर. अगर वो नो कर दिया तो आपकी लाइसेंस कैंसिल कर देगा, फिर खत्म कहानी, फिर आप बनाते रहो कंपनी. ठीक है? क्लियर? Yes. लास्ट 3 वी हैव स्पॉन्सर. स्पॉन्सर कौन है? प्रोजेक्ट को कौन स्पॉन्सर करता है. ओके, वो भी होता है. कभी कभी क्या होता है, कोई बड़ा आदमी रहता है वो स्पॉन्सर करता है, जितना खर्चा है उसका खर्चा पानी. प्रोजेक्ट में बहुत खर्चे होते हैं, आपको सॉफ्टवेयर लेने का, लोग जो काम करेंगे, क्लाइंट जो टेक्निकल बीए आएगा सॉफ्टवेयर कंपनी से, उसका रहने का खर्चा, उसका खाने का खर्चा, सब कुछ. इट्स कॉल्ड द प्रोजेक्ट स्पॉन्सर. देन सप्लायर. सप्लायर मतलब जो प्रोवाइड करेगा, सप्लायर सप्लाई करेगा ये चीज. कभी कभी क्या होता है, आपको हार्डवेयर चाहिए, आपको सर्वर चाहिए, आपने एक नया सॉफ्टवेयर लिया, आपके पास सॉफ्टवेयर हार्डवेयर नहीं है, आपके पास सर्वर नहीं है, तो जो सप्लाई करेगा सर्वर वो भी सप्लायर है. एंड लास्टली द टेस्टर. टेस्टर मतलब जो एप्लीकेशन को टेस्ट करेगा, बताएगा कि सर ये एप्लीकेशन बराबर है, अच्छे से चल रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. सारा एप्लीकेशन कुछ भी आप टेस्ट करते हो कि नहीं? आप जब दुकान में जाते हो आप कोई खरीदने, Yes. तो डायरेक्टली उठा के ले आते हो या टेस्ट भी करते हो? तो ये टेस्ट करके Test तो करते दिखाओ. बिल्कुल. तो एक तो आपको कभी कभी दुकानदार टेस्ट कराता है, जब बल्ब खरीदते हो वो टेस्ट कराता है. सेकंड, आप खुद भी टेस्ट करते हो, जब आपको लगेगा नहीं नहीं सब सही है, देन ओनली परचेज. सो टेस्टिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट विच वी विल लर्न इन डिटेल. ये करीब करीब 3 घंटा, 2 से 3 घंटा जाएगा. इसमें क्या क्या टेस्टिंग, बहुत सारा इंपॉर्टेंट है. ठीक है? सो दीज आर द वेरियस स्टेक होल्डर ऑफ द प्रोजेक्ट. लिस्ट ऑफ कॉमन स्टेक होल्डर, आई थिंक इसका जो डेफिनेशन है लिखा हुआ भी है अपना पीडीएफ में. ठीक है ना? तो गो थ्रू दैट एंड दैट्स इट फ्रॉम टुडेस. विल कंटिन्यू टुनाइट. थोड़ा सा आज रात को थोड़ा सा धीरे धीरे मैं मीटर को बढ़ाऊंगा. अभी तक तो थोड़ा सा इजी चल रहा था, थोड़ा सा रात को थोड़ा सा मीटर बढ़ाना पड़ेगा. ठीक है? Okay. Okay, sir. Okay. ग्रेट. आर यू लाइकिंग इट? Yes, sir. Yes. और भी मजा आएगा आगे जाके. ठीक है? Yeah. मैं Yes, जो sir. नोट्स वगैरह मैं भेज देता हूँ, आज मैं भेज दूंगा. ठीक है? Okay, है. sir. Okay. ओके, बाय Thank गाइस, you. टेक केयर. Bye. Bye. बाय. Bye.